Good morning, students. We are going to discuss or you can say revise the next topic, that is Microsoft Visual Basic 2010. For your final paper, 2 chapters of Visual Basic and 2 chapters of HTML. So we are going to discuss Visual Basic 2010 Express. So this is the screen, welcome screen here. If I click on new project, so here are some options are here, like a new project, open project, window application one. Then first, these are the recent projects. Okay, this side, get started, and latest news. Okay, and after that, here is quick create your first application. And next one is what is new in Visual Basic Express. These are the different components which we can see in the uh, home page or first page of Visual Basic. So these are the new project or open project. Okay, second one, the recent projects. Next is get started, and then the latest news section. And in your book, there is one uh, option is given, uh, property section, but property section is not visible here. तो आपके पास ये आप इसको चेंज कर सकते हो. तो आपके पास ये डिफरेंट आपके पास you can say these are the few options given in the first page of your Visual Basic. Now, if I click on new project, so file Visual Basic is called project. I click on new project. Here is some options are here. You will have to click on window forms application. Okay, you will have to select this. Otherwise, there are different options are there: WPF application, console applications, class library, WPF browser applications. But you will have to click on which one? The first option, and then click on OK. After processing, you will get a one window. In this window, here we have one form. So by default, एक form open हो जाएगा, जिसका जिस form 1. तो आप यहाँ पे different components देख सकते हैं window के. Here is a title bar. ठीक है. Then menu bar. These are toolbar. Here is toolbox. ठीक है. Toolbox में से आप different tools you can insert in your form. Okay, so these are toolbox. Then after that, here is in this side there is a properties, there is a solution explorer. Clear? तो जो भी आप control insert करोगे, for example, you insert one you can say here you insert one label. Okay, तो जो भी label आप insert करोगे, जो भी selected है उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी. अगर लेबल्स को सेलेक्ट करोगे, लेबल की प्रॉपर्टी आएगी. अगर आप फॉर्म को सेलेक्ट करोगे, फॉर्म की प्रॉपर्टीज आएगी. तो लिखा आएगा form 1. ओके, नेम ऑफ द फॉर्म.
एंड इफ यू क्लिक ऑन लेवल 1 देन लिखा आएगा यहाँ पे लेवल 1, तो ये रेलिवेंट प्रॉपर्टीज दिखाएगा। this side solution explorer, तो solution explorer show the different inserted forms and in your project। तो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल आ रही होगी। तो आपके पास there is a solution explorer, this display the list of forms and other objects that constitute the application। तो किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो भी फॉर्म्स हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहाँ पे डिस्प्ले होते हैं? हियर इन एक्सप्लोरर विंडो, solution explorer, sorry, solution explorer, clear? And in properties, the property of selected object will be displayed, clear? And in the form, this is the working area where we can insert different controls. So here is, if I, here is a, this is called design window, ठीक है? जहां पे आप कुछ भी इंसर्ट करते हो आप फॉर्म, this is your design mode, this is your design mode। whenever you double click on any control, there is which one, there is a coding, ठीक है? कोडिंग विंडो इज देयर, तो यहाँ पे आप कोडिंग कर सकते हो, क्लियर? सो दिस इज योर डिजाइन विंडो, this is your coding window। So two tabs are here, then here is a form 1 design, form 1, so this is a coding window। so there are two windows, two tabs are here। जब आप किसी भी विजुअल बेसिक के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, देयर आर थ्री मोड। डिजाइन मोड मींस हियर यू डेवलप द डिजाइन, यू इंसर्ट द कंट्रोल, द टाइप, द कोडिंग, ये डिजाइन मोड है। जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, कैसे एग्जीक्यूट करोगे? इन टूल बार देयर इज ए स्टार्ट डिबगिंग बटन। तो जैसे ही आप रन करो, एग्जीक्यूट करोगे, दिस इज कॉल्ड रन मोड, दिस इज कॉल्ड रन मोड। इफ देयर आर एरर्स then we will get break mode। okay, clear students? How many modes Visual Basic has? Three modes। one is called design mode, second one is called run mode, and third one is called break mode। so here design mode, डिजाइन मोड में आप तो कंट्रोल्स इंसर्ट करते हो, कोडिंग टाइप करते हो, ये सारा का सारा डिजाइन मोड। आई एम नाउ वर्किंग इन डिजाइन मोड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय प्रोजेक्ट आई विल एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम, दिस इज कॉल्ड रन मोड। एंड इफ देयर आर एनी एरर देयर, एरर इज कॉल्ड बग, ठीक है? तो उसको हम कहेंगे ब्रेक मोड। सो दीज आर थ्री मोड्स अवेलेबल इन विजुअल बेसिक। Next is in my design window, ठीक है? ये मेरी डिजाइन विंडो ही है क्योंकि मैंने अभी रन विंडो को, प्रोग्राम को रन ही नहीं किया, एग्जीक्यूट ही नहीं किया, दिस इज माय रन विंडो। तो इन डिजाइन विंडो if I want to add any control, there are methods। one is double click on the control, ठीक है? जैसे करो डबल क्लिक, जैसे डबल क्लिक करोगे आपके पास कंट्रोल इंसर्ट होगा। गो टू द टूल बॉक्स, डबल क्लिक ऑन द कंट्रोल। सेकंड मेथड, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, दिस सेकंड मेथड। थर्ड मेथड, click on any control, come to your form, there will be a plus symbol, plus sign in your pointer, press your right button of your mouse and draw a rectangle, then that control will be inserted। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
मैंने यहाँ पे क्लिक किया टूल बॉक्स के ऊपर, वापस आया मैं फॉर्म में, ड्रॉ वन स्क्वायर और बॉक्स, रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं या स्क्वायर एज यू विश। जैसे करोगे कंट्रोल इंसर्ट हो। एनी डाउट इन दिस? यस, क्विकली गिव द आंसर। एक और मेथड भी है, मैं वो भी आपको बता रहा हूं। आपने किसी भी कंट्रोल के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड देन क्लिक ऑन पेस्ट। ठीक है, ये देखिए बेटा, जैसे मैंने किया तो बेटा आपके पास यहाँ पे फिर प्लस सिंबल आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेबल पे राइट क्लिक किया, पेस्ट, जैसे मैं माउस लेके आऊंगा इट विल बी कन्वर्टेड टू प्लस सिंबल। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो। तो देन ड्रॉ द रेक्टेंगल लाइक दिस। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स टू इंसर्ट डिफरेंट कंट्रोल्स। ठीक है, तो ये कंट्रोल इंसर्ट करने का डिफरेंट मेथड्स है। नाउ इफ योर फॉर्म इज एम्प्टी और यू सेलेक्ट द फॉर्म, तो यहाँ पे फॉर्म की प्रॉपर्टीज आएंगी। क्लियर? सो वी हियर इज अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर देयर। आप फॉर्म के ऊपर की तरफ लिखा हुआ है इन टाइटल बार फॉर्म वन, by using text property you can change it. For example, you want to add two numbers. In that case, in the text property of form, type add two numbers. Clear? Your title is changed. Clear? And if you want to change its name, ठीक है, तो यहाँ पे बिगिनिंग में आ रहा है नेम प्रॉपर्टी, by default form 1, it means at the time of coding you will use the form का name क्या है, form 1. Clear? But if you want to change it, you can click here and change the name. So there are two properties मैंने discuss कर ली. One is name, it is the name of the your control and it is helpful while typing the coding. It is not important now, ये अब important नहीं है. At the time of typing the coding this is important. Name of control. By default, when we insert any control, by default name is same like form 1. When we will insert second form 2 without space. In the same way, label 1, label 2, label 3, text box 1 without space, text box 1, text box 2, text box 3. So name will be are same, similar to the control, but you can change it. This is helpful because name is important when you are typing the coding. This is not important now. Next is, if you want to change the background color of your form, there is a back color. Clear? Back color. Click on this. ठीक है, एरो, जहां पे एरो आ जाएगा, डाउन एरो, click on the down arrow and select the background color. There are on a limited number of background color. A list will be displayed and select the relevant one. You can also insert any image as a background. Then property name is background image. और background color के लिए कौन सा है, back color. Here is a background image. If you click here, there are 3 dots. Click that. Here is click on import button. Select the image. Click on open. Then click on OK button. Image will be inserted. Clear? बेटा जैसे हमने image, yes बेटा, yes, there is a one doubt. Bani, unmute yourself. सर एक बार इमेज का फिर बता दो. Yes बेटा, if you want to insert background image,
Then click on background image. There are 3 dots. Click on that. A dialog box will appear. It has 2 options: local resource, and second one is project resource. Local resource means that will be saved in your कंप्यूटर सिस्टम। पर जब आप कंप्यूटर की इस फाइल को कहीं पे और कॉपी करोगे तो फाइल कॉपी नहीं होगी साथ में। पर जब आप करोगे प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल, इसमें अगर आप इंपोर्ट करोगे, वेन एवर यू आर कॉपिंग द प्रोजेक्ट, योर फाइल विल बी कॉपी। बानी क्लियर? ठीक है। जब आपने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपनी फाइल को कॉपी करना है, अपने प्रोजेक्ट को, तो अगर आपको क्या सिलेक्ट करना चाहिए? प्रोजेक्ट रिसोर्स फाइल। तो इसमें आपने इंपोर्ट करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन ओपन बटन। ठीक है, यहाँ पे 2 फाइल्स आर देयर। तो दोनों में से जो भी फाइल आपने एज ए बैकग्राउंड सेट करनी है, सिलेक्ट दैट एंड क्लिक ऑन ओके बटन। बानी क्लियर? Yes, sir. Okay beta. So we discuss here text property, name property of form, background text color, then back color and background image. Clear? तो ये हमने सारा डिस्कस कर लिया। these are the only important properties. Clear? तो ये important properties है हमारे पास। Next is, if I am going to insert one label, I click on toolbox. There is search for your label. Double click on that. Label will be inserted. Now, in this label, you can change the text. By default, it is label 1. ठीक है, जैसे ही हमने लेबल को सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देयर इज ए टेक्स्ट प्रॉपर्टी इन प्लेस ऑफ लेबल 1। आई एम टाइपिंग हियर फर्स्ट नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर। तो टेक्स्ट में क्या हो गया? फर्स्ट नंबर आ गया। इस जो लेबल का नेम क्या है? लेबल 1। यू कैन चेंज इट, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट नो, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, व्हाई यू आर चेंजिंग दिस? नेक्स्ट इज, इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर। देखिए बेटा, बैकग्राउंड कलर में आपके पास स्काई ब्लू सा आया है, जो आपका बैकग्राउंड कलर ऑफ योर वेब पेज वो आ रहा है। ठीक है, तो इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, क्लिक हियर। ठीक है, तो आप कोई भी बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। और ठीक है, तो कोई भी आप कलर ले सकते हो। नेक्स्ट इज, if you want to change font color, foreground color, there are 2 colors, background color and foreground color. जो background color background का होता है and foreground color text का color होता है। तो there is a 4 color. Click on arrow button, select your foreground color. तो मैंने इसको blue color का ले लिया। Now if you want to change the font style, click on font, then there are 3 dots are there. A dialog box will appear. Here is your dialog box. Here you can also select the font style. Then font size. After that, click on OK button. This is your changes. So there is a font and 4 color. Font and 4 color. अब एक और आपके पास यहाँ पे there is a one more property, enabled. अगर मैं इसको false कर देता हूँ, I'm selecting this and making it false. ठीक है, तो during when wait 1 minute.
This will be used in the coding. Yes, Anve, if there is a doubt, yes, please unmute yourself. Beta. सर एक बार प्लीज वो साइज वाली फिर से रिपीट कर दो. Which one? साइज प्रॉपर्टी. Okay, size property. Beta, you will have to select the font. Then you will have to click on font property. There are three dots. Click on that. Dialog box will appear. Here is a font styles are here. Select any font style. There is another property that is font. Here is a font and font style. In font style, there is a italic, then underline, these things are there. Select your style and then size 28, 26, and then click on OK button. Unget clear? Now, I am going to insert in another label. Double click on that. This is label 2. Now again, its size is very less. So you will have to change the text. Here is the label 1. Change it. Second number. Then click on font, 3 dots, select the style, and then font size. Click on OK button. And if you want to change foreground color, there is a 4 color option. So your text color change correct. Then select it. Any doubt in this? Yes, Bhavika. सर लेबल के बैकग्राउंड में इमेज लग सकती है? इसमें फॉन्ट में लेबल में बेटा? यस सर. बेटा इन लेबल में in case you want to set the background color, you can change it, but you can't select any background image. There is no any property. ओके. Okay बेटा? But for text, there is a image property. Bhavika, unmute yourself. यस सर. बेटा जो फॉर्म की बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टीज है, पर अगर आपने किसी भी कंट्रोल की बैकग्राउंड चेंज करनी है, देयर इज ए इमेज प्रॉपर्टी. क्लियर? नाउ अगेन 3 डॉट्स. अब यहां से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है, नाउ ये बैकग्राउंड हो गया. तो प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. फॉर्म के अलग है, कंट्रोल्स के लिए अलग है. Now next is I'm going to insert third label. It is a third label. Then apply the same thing. In text, type here sum, and then in font, in foreground color, select the color, and in font, select similar font and size. And click on OK button. तो यहाँ पे मैंने 3 forms, 3 labels I have inserted. Then remember the names are label 1, label 2, label 3. Okay.
Now, if I want to insert text box में क्या है? User can enter the data. Clear? So I select here text box. 3 text box I will have to insert. First, I double click, then double click, then double click. So 3 text boxes I inserted. Here is 1, text box 1, then text box 2, and text box 3. Now again, if you click on text box 1, then properties of text box 1 will appear. You can apply different properties, like you can change the foreground color, you can change the font of entering the data. ठीक है, जब आप डाटा एंटर करोगे तो वो किस फॉन्ट में आए, उसका स्टाइल क्या होगा. तो आई सेलेक्ट हियर, देन इट्स फॉन्ट साइज, किस फॉन्ट साइज में डाटा एंटर करोगे, क्लिक ऑन ओके बटन. देन अगेन select for second one. And third one, same. Yes, Mehakpreet, please unmute yourself, beta. Mehak, your voice is not audible, beta. Unmute yourself, and if you want to put any question, please. सर अभी मुझे बानी का फोन आया था, वो कह रही थी एंटर नहीं कर रहे सर, वो वेटिंग रूम में अभी. Beta, I have given the permission, beta. ठीक है. Now next Okay, is sir. in here in text box there are different options are there. ठीक है, different options यहाँ पे आ रही है, तो you can change it. There is a font for foreground color. You can also here, so different options are there. So we discuss one by one these things. Okay. Now I insert one button. ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक मैंने बटन इंसर्ट करने जा रहा हूँ. बटन के ऊपर डबल क्लिक किया, बटन यहाँ पे इंसर्ट हो गया. नाउ देयर आर डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बटन. ठीक है, इफ आई क्लिक ऑन टेक्स्ट, हियर इज बाय डिफॉल्ट इट इज बटन 1. So I type here sum total. Then you can change font. ठीक है, if you want to increase its size, font size, so this is your button. Okay, so this is your one application in which you are going to add 2 numbers, but this is your design window जहां पे आप डिजाइनिंग कर रहे हैं. तो अगर आपने इसके ऊपर कोई भी कोडिंग करनी है, तो you will have to double click on the control, and here what I want, when I click on sum total button, then I will get the result. Okay, तो आपने क्या करना है, जिस भी कंट्रोल के ऊपर आपने कोडिंग करनी है उस कंट्रोल को डबल क्लिक करना है. कोडिंग विंडो will appear, the cursor will blink,
So you will type the coding in the place where cursor is blinking. You will not change it. जहां पे भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है वहां पे आपने कोडिंग को टाइप करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर बेटा? Okay, now different here I take if I want to declare any variable, then I will use I will type dim a is a variable. Yeah, I'm taking sum as int. तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया sum as a integer. So dim is a keyword. Clear? So sum is a keyword, so that's why I'm taking S capital. ठीक है? Could change the name, another name, like take total. And then you will take here coding is total is equal to. अब बेटा मेरे पास 3 टेक्स्ट बॉक्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3. इसमें जो डाटा है I can access text box 1 dot text plus text box 2 dot text plus text box 3 dot text. मैंने सभी को ऐड कर दिया और किसमें कॉपी कर दिया टोटल में. बट रिमेंबर वन थिंग बेटा, जो टेक्स्ट बॉक्स में so in these text boxes data is of text nature. It is not a numeric nature. इसकी numeric nature नहीं है. So you will have to convert this into number by using val function. तो हमें कौन सा फंक्शन लगाना है बेटा? val function, value function. Val function convert your string data into numeric data. Inside that you will take text box 2 dot text. ठीक है? नाउ आई हैव वैल्यू इन टोटल. टोटल में मेरे पास वैल्यू आ गई. अब ये वैल्यू मैंने प्लेस करनी है. कहां पे प्लेस करनी है? टेक्स्ट बॉक्स 3 में. सॉरी बेटा, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स 3 भी लिख दिया. आई एम डिलीटिंग दैट. तो जो मेरे पास डाटा आएगा वो मैंने इंसर्ट करना है टेक्स्ट बॉक्स 3 में. तो यहाँ पे होगा टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू टोटल. तो टोटल में जो डाटा आएगा वो कहां पे इंसर्ट हो जाएगा? इन टेक्स्ट बॉक्स 3 में. आफ्टर डूइंग दैट देयर इज अ वन बटन, स्टार्ट डिबगिंग. सो आई टाइप हियर 10, in second I type 20 and click on sum total. 30 is there. Monday I will repeat this again. Okay, so now time is over. I am going to close the meeting. Take care. Bye beta.